Okay, so let us start the class for today. In the last class, what we have learned, we are looking for some basic properties of vector space, which are listed in this one. And before that, someone has asked me to give some example in which there is unusual operations and the set is a vector space. Means अनयूजुअल ऑपरेशंस मीन्स यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन अभी तक जो भी हम लोग हर चीज के लिए डिफाइन कर रहे थे ना, जैसे हमारा ये आया था फर्स्ट वाला एग्जांपल, इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स थे, यहाँ पे भी हमने उनका यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लिया था। सेकेंड वाला एग्जांपल था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सी एन ओवर सी, इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लिया था, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है। थर्ड वाले एग्जांपल के लिए हम लोगों ने अनयूजुअल ऑपरेशन लिया, बट समहाउ ये वेक्टर स्पेस नहीं प्रूफ हुआ, राइट? जब ये वेक्टर स्पेस नहीं था। फोर्थ वाले के लिए हम लोगों ने nth डिग्री पॉलिनोमियल का सेट लिया ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और यूजुअल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइन किया, उनके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया कि ये भी हमारा वेक्टर स्पेस फाइंड आउट कर रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंसेज का, जिसे हम लोगों ने फिर से देखा कि अगर हम लोग एलिमेंट वाइज सम, जो कि हमारा मैट्रिक्स वाला था, उसी को जनरलाइज करें, या फिर जो आरएन में था उसे जनरलाइज करें, देन we are again finding that the set of infinite sequences is also forming a vector space. And after that we have seen if we are taking the set of continuous functions, then they are also forming a set of vector space. And in the last example, this last example, what we have seen, if we are taking a function from R to R that satisfy the equations f double dash is equal to minus of f, then this also form a vector space. So basically in this what we are doing, we are taking the solution of the differential equation and homogeneous differential equation, and we have shown that the set of all solutions are also forming a vector space. Today first we will see these two examples, whether any one of them is able to generate a vector space or not. ठीक है? Because यहाँ देखिए, अब अगर हम x1, x2, x3 v be a set of R3, or simply v is equal to R3 and f is equal to R, and define the vector addition and scalar multiplication in this way, that x1, x2, x3 O plus y1, y2, y3 is equal to x1 plus y1 plus 1, x2 plus y2 plus 1 and x3 plus y3 plus 1, and c dot x1, x2, x3 is equal to what? C into x1 minus 1 plus 1, C into x2 minus 1 plus 1, C into x3 minus 1 plus 1. Then we have to verify whether this will be a vector space or not. Please try to calculate that. वेक्टर स्पेस देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नहीं बताएंगे? हमें भी आ जाएगा, आप लोग बता देंगे तो। V is equal to R3, F is equal to R, vector sum from V to V, sorry, V cross V to V is defined how? V cross V to V defined by x1, x2, x3 O plus y1, y2, y3 is equal to x1 plus y1 plus 1, x2 plus y2 plus 1 and x3 plus
y3 plus 1 and scalar multiplication is defined C dot from F cross V to V by C dot of x1, x2, x3 is equal to C x1 minus 1 plus 1 C x2 minus 1 plus 1 and C x3 minus 1 plus 1. Then we have to check whether V over R with respect to these operations is a vector space or not. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिविटी, राइट, एसोसिएटिविटी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? 3 मेंबर्स चाहिए वेक्टर वेक्टर के 3 वेक्टर्स चाहिए। So for the first property, associativity, right, V1 is equal to x1, x2, x3, V2 is equal to y1, y2, y3 and V3 is equal to z1, z2, z3, V3 any members of V, then V1 plus V2 plus V3. By definition it will be what? बताइए। V1 हमारा x1, x2, x3 है, V2 हमारा y2, y2, y1, y2, y3 है और वेक्टर सम हमारा ऐसे डिफाइन है। Then what will be V1 plus V2? V1 plus V2? x1 plus y1 plus 1, Yes. x2 plus y2 plus 1 and x3 plus y3 plus 1. Yes. Plus प्लस मैम हो जाएगा z1 प्लस z1 z2 z3, राइट। अब इन दोनों वेक्टर्स का सम करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि ये भी तो x1 हमारे प्लस हाँ x1 प्लस y1 प्लस 2, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस 2। ठीक है, यही है ना? यस मैम। फर्स्ट x2 प्लस कंपोनेंट, y2 सेकंड प्लस कंपोनेंट z2 प्लस प्लस 1 plus 1 plus z2 plus 1 and x3 plus y3 plus 1 plus z3 plus 1. Now what we are seeing, x1, y1, z1 all are real numbers. So can I shift this bracket from x1 plus y1 plus 1 to y1 plus 1 plus z1? Can I shift that by utilizing the associativity property of sum of real numbers? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम इस पे B3 के लिए Z1 प्लस 1 में ये मैम Sorry? z1 प्लस 1 क्यों हुआ है प्लस 1? सी यहाँ पे वेक्टर सम डिफरेंट तरीके से डिफाइन है ना, O प्लस whenever I mean x1, x2, x3, O plus y1, y2, y3, the resultant will become x1 plus y1 plus 1. ये हमारा सम इसी तरीके से इसके लिए डिफाइन है। सम इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। फिर हमने पहले v1 प्लस v2 का सम किया,
V1 प्लस V2 के लिए हमने जी। O मैम प्लस की अगेन एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिएगा। वही कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। V1 O प्लस V2 के लिए हमने सेम डेफिनेशन अप्लाई की, तो V1 O प्लस V2 हमें क्या मिला, x1 प्लस y1 प्लस 1, x2 प्लस y2 प्लस 1, x3 प्लस y3 प्लस 1, और V3 को हमने एज इट इज O प्लस के साथ हमें लिखा हुआ है। सी यहाँ पे प्लस दूसरी है, रियल नंबर वाले यूजुअल एडिशन है, और ये O प्लस हमारा वेक्टर एडिशन वाला सम है, ठीक है। और V3 की वैल्यू हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट की। अब ये जब ये V1 प्लस V2 जब आया, ये भी तो एक मेंबर ऑफ V हो गया ना, सम ऑफ रियल नंबर्स ही तो है, सम ऑफ रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, सो विल दिस बी अ मेंबर ऑफ V? V में हमारा R3 ही था ना पूरा। यस मैम। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, ये V1 प्लस V2 जो था वो हमारा कैपिटल V में जाएगा या नहीं? जाएगा जाएगा मैम। मैम। जाएगा, मतलब ये अब एक मेंबर ऑफ V हो गया और ये दूसरा मेंबर ऑफ V हो गया। अब फिर से इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है हमें, राइट, O प्लस वाला सम, वेक्टर एडिशन। देन व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल टेक, जैसे यहाँ पे था तो क्या था, x1 प्लस y1 प्लस 1, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का प्लस सेकेंड कंपोनेंट, सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड वेक्टर का प्लस 1। सो द सेम थिंग आई हैव डन हियर, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का प्लस सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड वेक्टर का, देन प्लस 1। Similarly, for the second one, what I have done? Second component first vector का plus second component second vector का plus 1. ऐसे sum define है ना हमारा। x2 O plus y2 means x2 plus y2 plus 1, not only x2 plus y2. Am I right? ओके। यस मैम। That's why I यस। have written here plus. Now, by utilizing the associativity property of sum of real numbers, can I shift the bracket from x1 y1 1 to y1 1 z1? कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कर सकते हैं तो चलिए करते हैं। Then it will become what? x1 y1 plus 1 plus z1 plus 1, x2 plus y2 plus 1 plus z2 plus 1, and x3 plus y3 plus 1 plus z3 plus 1, राइट। अब अगर हम इसको अपने O प्लस वाले डेफिनेशन में लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम लिख रहे हैं, देख के बताइएगा फिजिबल है या नहीं। x1 x2 x3 O प्लस y1 plus 1 plus z1 y2 plus 1 plus z2 and y3 plus 1 plus z3। सही है क्या ये? यस मैम। यस Right? मैम, वी कैन राइट। यस मैम। हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि y1 सेट ऑफ रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आर एडिशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव। सो कैन आई रिप्लेस दिस 1 and z1, 1 and z2 and 1 and z3? यस मैम। कर सकते हैं ना। और जब हम चेंज करेंगे तो हमें क्या ये मिल जाएगा, दिस विल बिकम v1 plus O plus v2 plus v3, correct? Yes or no? करेक्ट। यस मैम। So this implies what? Vector addition follows as associativity. यस मैम। यस मैम। Now the second property हमें क्या दिखानी होती है? कम्यूटेटिविटी। Yes, commutativity। इसके लिए हमें कितने वेक्टर्स की नीड होती है?
दो वेक्टर्स। 2 वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि V1 V2 हमारा कोई दो मेंबर है V का। देन V1 O प्लस V2 विल बी व्हाट? आई डेफिनेशन V1 हमारा, हम V1 V2 V3 जब भी लिख रहे हैं हमारी मीनिंग यही है, बस शॉर्ट नोटेशन के लिए हम लोग V1 V2 V3 यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो इन ठीक मैम। रिस्पेक्ट टू दिस V1 O प्लस V2 विल बी व्हाट? x1 plus y1 plus 1, x2 plus y2 plus 1, x3 प्लस x3 plus y3 प्लस y3 plus 1. अब क्या करें? क्योंकि हमें ले आना है V2 प्लस V1। x1 हाँ y1 को इंटरचेंज कर सकते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी रियल राइट, कम्यूटेटिविटी ऑफ रियल नंबर्स अप्लाई करके एडिशन ऑफ रियल नंबर्स हम लोग x1 y1 की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं। y1 प्लस x1 प्लस 1, y2 प्लस x2 प्लस 1, y3 प्लस x3 प्लस 1, and this will become what? v2 o plus v1, है ना? यस मैम। So this will imply what? Vector addition follows commutativity also. Now third property क्या find out करनी होती है? आइडेंटिटी Additive. एलिमेंट ऑफ वेक्टर Right? So कोई गेस करके बता सकता है क्या कि हम वेक्टर आइडेंटिटीज में लेके चल सकते हैं कुछ क्या? वेक्टर आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? लेट देयर एग्जिस्ट 0 बार बी एनी नंबर, आई एम डिनोटिंग क्योंकि ये A1 A2 A3 in V such that V1 plus 0 bar is equal to V1 for every V1 in V, यही होती है ना? यस मैम। यस लेकिन अभी हम लोगों ने जब माना कि O बार कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें A1 A2 A3 की वैल्यू नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली क्या होंगे। इनकी वैल्यूज कोई बता सकता है क्या? हम क्या लें? Zero. They are belongs to real number हाँ, रियल नंबर्स में and कि V में their बिलोंग कर value रहा है। is 0. अच्छा ठीक है, अगर हम 0 लेते हैं तो V1 plus 0 0 0 will be what by definition? x1 plus 0 plus 1, -1 लेंगे मैम। x2 plus 0 plus 1, x3 plus 0 plus 1. This is not equal to V1 ना? Yes ma'am. मैम -1 लेंगे, ये 1883। ठीक है, so in some cases it is not always necessary that zero vector will be a zero of real numbers. मीन्स अगर जीरो वेक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सारा कंपोनेंट जीरो ही होगा, जीरो रियल नंबर वाला होगा। Sometimes it depend on the operation that what will be the value of this zero vector. For this, if our this zero bar vector satisfying this property, then what will be the value can be determined from this one. V1 हमारा क्या था? x1 x2 x3, O बार क्या है? A1 A2 A3. So V1 O plus, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया था, V1 O plus O बार क्या होगा? x1 plus a1 plus 1, x2 plus a2 plus 1 and
x3 plus a3 plus 1. This has to be equal to x1, x2, x3 for every v1 in v, right? अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उसके हर एक एलिमेंट बराबर एक दूसरे के बराबर, राइट, अगर वो बराबर हो। एलिमेंट वाइज इक्वल हो, है ना? Yes. यही कह रहे हैं ना आप लोग. So by equating these two matrices, what we will obtain? x1 plus a1 plus 1 is equal to x1, x2 plus a2 plus 1 is equal to x2, x3 plus a3 plus 1 is equal to x3. And then what this will give us? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? a1 is equal to -1, -1, a2 is equal to, -1, and a3 is equal to. -1. So from this, if we have taken some unknown O bar which satisfy this property, then what we have found, this O bar has a unique value which belongs to V and satisfy this property for every V1 in V. So this implies what? There exists O bar is equal to -1, -1, -1 in V such that V1 plus O bar is equal to V1 for every V1 in V, and this implies what? Existence of zero vector follows, है ना? क्या हुआ? कोई दिक्कत हो रही है? नो मैम. ओके, तो अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, नेक्स्ट क्या हमें चेक करना होता है? इनवर्स, Inverse element. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स चेक करना होता है. उसको कैसे चेक करें? मान लेते हैं कि V1 अगर V में बिलोंग कर रहा है, V1 हमारा गिवन है, सो देयर एग्जिस्ट V2 इन V such that V1 O plus V2 is equal to 0 बार. वेक्टर आइडेंटिटी 0 वेक्टर देता है ना, एडिटिव इनवर्स उसका. बताइए. यस मैम. Yes, yes. So this will imply as what? x1 plus y1 plus 1, x2 plus y2 plus 1, x3 plus y3 plus 1 is equal to O बार क्या है? -1, -1, -1. अब हम यहाँ पे x1, x2, x3 अगर आपको दे तो क्या आप हमें y1, y2, y3 फाइंड आउट करके दे सकते हैं? यस मैम. बताइए क्या होगा y1, y2, y3? बताइए. -x1 -2. -x1 -x1 -2 -2 प्लस 1 Minus -x3 प्लस 1. x2 -2. -x3 x2 -2, minus right? So what we obtain from this, for every V1 in V, there exists V2 defined by, corresponding to this V1, defined by -x1 -1 2 -x2 -2 -x3 -2 in V such that V1 plus O V2 is equal to 0 vector.
इसी V2 को आप माइनस ऑफ V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नोटेशन में इनवर्स वेक्टर V1 दिया था, राइट? तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे लिखना चाहते हैं, बट व्हाट इज आवर टारगेट टू शो हियर? ओके, लेट अस राइट दिस वन ओनली, माइनस ऑफ V1 ही लिख लेते हैं. There exists minus of V1 such that V1 plus minus of V1 is equal to 0 bar. Correct? Existence of additive inverse is also fulfilled. Existence of inverse vector, sorry, not additive inverse. ठीक है ना? अगली प्रॉपर्टी क्या चेक करनी होती है? मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी नहीं, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी. मल्टीप्लिकेशन यस एसोसिएटिविटी फील्ड में चेक करते हैं ना. यहाँ पे हमें कंपैटिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैम. नहीं, यहाँ पे हमें चेक करना होता है कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद फील्ड मल्टीप्लिकेशन. एक वेक्टर, दो स्केलर्स, तो b और जब b एक स्केलर है, b एक वेक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वेक्टर में जाएगा. और अगेन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें हम a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर a इज अ स्केलर. And for being the vector space, this product should be equal to AB into V. मतलब ये A और B दोनों फील्ड के मेंबर्स हैं, तो इनके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा फील्ड मल्टीप्लिकेशन है ना? बताइए. यस यस और यहाँ पे जो था A into BB, ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. That's why this property is known as compatibility of scalar multiplication over field multiplication. So for this, let K1, K2 be two members of R and V1 belongs to V. Then K1, sorry, K1 C dot, K2 C dot V1. This will be what? By definition of scalar multiplication, K2 V1 will be what? बताइए. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम माइनस ऑफ V1 जो निकालना है तो मैम उसमें मैम प्लस हो जाएगा ना सारे टर्म्स. नहीं, ये माइनस ऑफ V1 नोटेशन है, ये V1 का माइनस नहीं है. वेक्टर इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स को हम लोगों ने माइनस ऑफ V1 नोटेशन दिया था ना. हर V के लिए एक माइनस V टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो कि V प्लस माइनस V इज इक्वल टू 0 दे. इसीलिए पहले हमने इसको V2 लिखा था, फिर चेंज करके माइनस ऑफ V1 किया, क्योंकि हम यहाँ पे इनवर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस माइनस V1 से. ये इस वाले V1 का नेगेटिव वेक्टर नहीं है. ठीक है, ओके. अगर ऐसी कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसे माइनस V1 ना लिख के V2 ही लिखते हैं, नो इशू. ठीक है.
यस ओके, अब ये K2 इंटू V1 क्या होगा बताइए हमें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? K2 into x1 minus 1, हम्म, K2 into x2 minus 1 plus 1, and K2 into x3 minus 1 plus 1. x1 minus 1 plus 1, K2 into x2 minus 1 plus 1, K2 into x3 minus 1 plus 1। अब इसके ऊपर K1 को अप्लाई करना है, K1 को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? K1 K2 into x1 minus 1 plus 1. This will be equal to K1 whole bracket K2 फर्स्ट कंपोनेंट, अब ये पूरा ट्रीट होगा ना, K2 x2 minus 1 plus 1, अब ये वाला माइनस x1 फर्स्ट टर्म में से जो माइनस हो रहा था, ये -1 एंड देन ये वाला +1, करेक्ट? मैम आई ये गेस वाला वो x1 होगा। सॉरी x1, ठीक है। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है ना, कैसे हम लिख रहे हैं कि अब हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इस वेक्टर का ये पूरा एलिमेंट कंसीडर होगा। सो जब हमारा x1 केवल था तो हमने क्या किया था, x1 में से -1 किया था, जो रिजल्टेंट आया था उसमें K2 का मल्टीप्लाई हुआ एंड देन जो रिजल्टेंट आया उसमें +1 किया। द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, दैट इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई K1 with this element, then what will be K2 into x2 x1 minus 1 plus 1, अभी तक का ये हमारा ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला पूरा इतना, देन इसमें से -1 करना था वो हमने किया -1, उसके बाद जो स्केलर था उसका मल्टीप्लाई होना था इस पूरे में एंड देन जो रिजल्टेंट आया उसमें +1 ऐड होना था, ठीक है ना? ये वाला स्टेप क्लियर है ना सबको? यस ओके। यस Similarly, second element will be K1, K2, x2 minus 1 plus 1 minus 1 bracket close plus 1, and third component will become K1, K2, x2, x3 minus 1 plus 1 minus 1 bracket close and plus 1. This plus minus will be cancelled. राइट? एक मिनट, Yes, मेरा ma'am. पेज Yes, खत्म हो ma'am. गया, मैं दूसरा पेज ऐड कर लेने दीजिए। Okay, so after this what this will become, K1 into K2 into x1 minus 1 bracket close plus 1, K1 K2 x2 minus 1 bracket close plus 1, and the last term will become K1 K2 x2 minus 3 minus 1 bracket close plus 1. Now K1 is a real number, K2 is a real number, x1 x2 x3 भी रियल नंबर है और -1 भी रियल नंबर है। तो इस पार्ट के लिए क्या हम एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं? Yes, मल्टीप्लिकेशन ma'am. इज एसोसिएटिव ओवर रियल नंबर्स, तो फिर इसको हम क्या लिख पाएंगे? देन इट विल बिकम
k1 k2 into x1 minus 1 plus 1 k1 k2 x2 minus 1 plus 1 k1 k2 x3 minus 1 plus 1. And by the definition of our scalar multiplication, by utilizing that, can I write this one as k1 k2 c dot v1? Yes, ma'am. Right? It will happen. Yes, ma'am. Right. So this implies what? Scalar multiplication is compatible with field multiplication. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? Multiplicative identity. Distributive. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला है ना कि 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी. अभी 5 ही प्रूव Yes, किया ma'am. ना. 6 कैसे हो गया? ओ 4 गायब हो गया है. Six one is what? We have to show that whatever the field multiplicative identity is, with that we have 1 c dot v is equal to v. सिंस हमारा गिवन फील्ड r है, r यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है ना. For 1 in r and v1 in v, 1 c dot v1 will be what? By definition 1 into x1 minus 1 plus 1, 1 into x2 minus 1 plus 1, 1 into x3 minus 1 plus 1, right? ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम चीज देगा. So this will become x1 minus 1 plus 1, x2 minus 1 plus 1, x3 minus 1 plus 1, minus plus 1 cancel हो जाएंगे and then this will become x1, x2, x3 are simply our v1. है ना? Yes, ma'am. So this property also satisfied. Now the next one is what? Distributivity. Okay. For this, let K1 क्या है? पहले कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? A into U plus V. Right distribution. Let K1 belonging to R and V1, V2 belongs to V. Then K1 C dot V1 O plus V2 will be what? For this, let us calculate K1 C dot, it will remain as it is, x1 plus y1 plus 1, x2 plus y2 plus 1, x3 plus y3 plus 1. है ना? अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? K1 x1 plus y1 plus 1
-1 ब्रैकेट क्लोज +1 k1 x2 plus y2 +1 -1 +1 k1 x3 plus y3 +1 -1 +1 +1 -1 will become cancel, and this becomes k1 x1 plus k1 y1 +1 k2 x2 plus k2 y2 +1 सॉरी 1 ही है ना k1 x3 plus k1 y3 +1 and what will be our right if this will be a vector space, then it should be equal to k1 c dot v1 o plus k1 c dot v2 है ना। अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो ये दोनों क्वांटिटी सेम आनी चाहिए फॉर बीइंग अ वेक्टर स्पेस। yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Let us see what this is coming. This will become k1 x1 minus 1 plus 1 k2 sorry k1 x2 minus 1 plus 1 k1 x3 minus 1 plus 1 o plus k1 y1 minus 1 plus 1 k1 K1 Y1 Y2 minus 1 plus 1. अब इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट +1 k1 x1 minus 1 plus 1 plus k1 y1 minus 1 plus 1 ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ये सेकंड कंपोनेंट एंड इसके बाद +1 होना है ना o प्लस वाला। Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. हम इसको समराइज करके लिखें या फिर इससे सॉल्व करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा k1 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और ये 1 so this will become x1 plus y1 minus 2 plus 3 k1 x2 plus y2 minus 2 plus 3 and k3 x3 plus y3 minus 2 plus 3 are both quantities same? Yes, ma'am. No, ma'am. इसी में से कोई यस भी कहा है आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं k1 x1 plus k1 y1 plus 1 and k1 x1 plus k1 x1 plus y1 minus 2 plus 3 so k1 into v1 o plus v2 is not equal to k1 v1 k1 v1 o plus k1 v2 ऊपर की तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी पर यहाँ आके हम लोग फेल हो गए कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी नहीं होल्ड हो रही है ये क्या इंप्लाई कर देगा v over r with plus and c dot is not a vector space इसीलिए जब भी वेक्टर स्पेस
हमें चेक करना होता है, हमें ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली जाके चेक करना होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद किसी ने ये भी पूछा था कि हम लोग सारी प्रॉपर्टीज क्यों चेक कर रहे हैं, अगर इनमें से कुछ चेक कर ले तो नहीं हो जाएगा। सो whenever we are proving vector space we cannot do that। हाँ, सब स्पेस में जब जाएंगे तो वहां जो चीजें आएंगी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस एग्जांपल सेज व्हाट, कि ये तो वेक्टर स्पेस नहीं हुआ इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। व्हाट अबाउट दिस वन? V be the set of real numbers strictly greater than 0, f be the field R, and define the vector addition and scalar multiplication by x plus y is equal to xy and c into x is equal to x raised to the power c. Then will this be a vector space or not? Try करें कि आप लोग करेंगे? We can try, ma'am, and in evening class we will come with the solution. Okay. इसे आप लोग ट्राई करिएगा कि हम इतना हिंट दे देते हैं कि ये वाला वेक्टर स्पेस है जहां पे एडिशन O प्लस वेक्टर एडिशन हमारा कैसे डिफाइन है, x इंटू वाई, क्योंकि अगर दो रियल नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। Yes, ma'am. तो x प्लस एक्स ओ प्लस वाई भी हमारा v में जाएगा, और जो सेकेंड ऑपरेशन डिफाइन है स्केलर मल्टीप्लीकेशन f क्रॉस v से v में जाता है। तो अगर c कोई भी रियल नंबर हुआ पॉजिटिव या निगेटिव, whenever we will power this c on x some positive real number, what will be the resultant, positive or negative? पॉजिटिव होगा। तो मतलब दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा v क्लोज है, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, o प्लस और c डॉट के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट अब बस आपको रिमेनिंग ये 8 प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या ये होल्ड हो रही हैं। अगर होल्ड होंगी तो वो वेक्टर स्पेस होगा, अगर नहीं होल्ड होंगी तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। But whenever you will verify this, you will find each and every property are being satisfied with that, and that's why the last one is a vector space. Although the first one was not a vector space, but this one will be. Now we will come to back our basic properties of vector space. हम लोगों ने ये दो देखे थे ना, राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वेक्टर जीरो इज यूनिक, दैट इज इफ जीरो एंड जीरो डैश आर टू वेक्टर्स that x plus 0 is equal to x and x plus 0 dash is also equal to x, for every x in V then 0 will be equal to 0 dash. Let us see how this will be. This one is your homework. शाम वाली क्लास में बताइएगा हो रहा है या नहीं। This says that for third property, 0 in V, 0 vector in V is unique. यूनिक प्रूफ करने के लिए हमें कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, तो पहले आप लोगों ने कभी कोई चीज यूनिक प्रूफ की है? नहीं किया है? No, ma'am. मैम जिसका सॉल्यूशन सिंगल एक ही हो गई। हाँ, तो एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसको दिखाने के लिए कैसे करते हैं कि दूसरा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फिर एक ही कर रहा है। मान लेंगे कि दूसरा सॉल्यूशन कोई है। हाँ, मैम किसी भी वेक्टर पे फिर दोनों को जीरो वेक्टर और इक्वल प्रूफ एडिटिव कर इनवर्स देंगे। यूनिक होते हैं। ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे क्या? कंट्राडिक्टरी मेथड नहीं यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको यूटिलाइज करेंगे कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जीरो वेक्टर यूनिक नहीं है तो दो रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, और उन दोनों मैम जीरो रिप्रेजेंटेशन से वेक्टर एंड एडिटिव इनवर्स।
और एडिटिव इनवर्स का क्या करना है? अच्छा, एडिटिव इनवर्स भी यूनिक होता है, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. फ्रॉम हियर व्हाट आई वांट टू प्रूव, लेट 0 and 0 dash be in V be two zero vectors. जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज v प्लस 0 इज इक्वल टू v. v प्लस, सॉरी हमने बिलोंग्स टू लिख दिया. v plus 0 is equal to v for every v in v. And since this 0 dash is also a zero vector, so this will imply what? V plus 0 dash is also equal to V for every V in V, है ना? यस मैम. अब अगर ये दो इक्वेशंस हैं, इनके राइट साइड दोनों के सेम है, तो क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड भी इनके सेम होंगे? ये भी V है, ये भी V है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे ना? यस मैम. यस मैम. V plus 0 is equal to V plus 0 dash V plus 0 dash, right? Now by utilizing our left cancellation law, can I write this as 0 is equal to 0 dash? यस मैम. तो अगर हमने दो रिप्रेजेंटेशन लेके भी चले जीरो वेक्टर के, तो हमें लास्ट में जाके मिल रहा है कि वो दोनों जीरो सेम है. So this implies what? 0 0 in is the V unique. is unique, right? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि Ma'am, in second line, what you हाँ have written, let 0, comma 0 dash belongs to V, na? हाँ Okay, ma'am. ठीक से लिख देते हैं, belongs to V. B टू जीरो वेक्टर्स, हमने दो जीरो वेक्टर्स मान के चले और बाद में क्या पाया कि दोनों ही जीरो वेक्टर सेम है. Then we have concluded that this zero vector in V is unique. Now the next says that inverse vector is also unique. इसको कैसे प्रूफ करें? Let X be any member of V and Y, Z belonging to V be two vectors which are inverse of X, right? तो अगर ये X, Y, Z दोनों इसके इनवर्स हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएगी? X plus Y is equal to 0 and X plus Z is also equal to 0, है ना? इनवर्स वेक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है ना कि अगर हम उसको उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर में ऐड करें तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है. Yes, ma'am. यस मैम. राइट? अब फिर से हमारे पास क्या आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 0. राइट साइड इन दोनों इक्वेशंस के सेम है. सिंस दिस इज अ इक्वेशन, फ्रॉम हियर वी कैन क्लेम दैट लेफ्ट साइड विल आल्सो बी सेम, यस मैम. right? And now by again utilizing our left cancellation law, can I say that this implies y is equal to z, Yes, ma'am, of course. right?
So this implies what? Inverse vector is also unique. The next property says what? 0 into x is equal to 0, where this 0 stands for scalar and this 0 stands for vector, क्योंकि वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो क्या आता है? वेक्टर। वेक्टर आता है। दैट्स व्हाई ये लेफ्ट राइट साइड वाला 0 जो है वो वेक्टर है और ये लेफ्ट साइड वाला 0 जो है वो स्केलर है। और ये कहता है कि अगर x में हम 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 0 वेक्टर प्रोड्यूस कर देता है। हाउ वी कैन शो दैट? We take one vector. One lane. No, ma'am. One. We take a vector. We multiply. इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? ओके, वी विल कवर दिस इन द इवनिंग क्लास। इसमें भी हमें लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ही यूज कर दी है, बट रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज 3 not 2 remaining 3 properties we will prove in the evening class. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ask Bye, ma'am. videos. Thank you, ma'am.